Hey everyone, this is Sanover Danish. I hope you're all doing great. So, in today's video, I'm gonna teach you how to make texture paste at home. Just take an old bowl, plaster of Paris डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें and mix it really well. अच्छा, ऑल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं. अभी जैसे मैंने ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया है, इसकी जगह आप बेबी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. Add some white glue. इसे बनाते हुए एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, हवा में बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है, तो कॉन्टिन्यूसली इसे मिक्स करते रहें. It will cost you much cheaper than buying it ready made. सपोज़ अगर हम 500 ml की बॉटल लेते हैं टेक्सचर पेस्ट की, तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ जाएंगे 1100 या 1000 की. और अभी आप जैसे घर में बनाते हैं इससे, तो मेरा ख्याल है ये मुझे 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं पड़ी होगी. जैसो के लिए भी एक वीडियो होनी चाहिए, होममेड किस तरह बनता है. जैसो और टेक्सचर पेस्ट दोनों का यही है कि अगर आप रेडीमेड बाय करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू मेक इट एट होम. मेरी नॉलेज के हिसाब से इसे 10 महीने तक यूज़ किया जा सकता है अगर इसे एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए. एज आई एम गोना यूज़ एम्प्टी जैम बॉटल. I hope you find this video informative. Please let me know in the comment section below. This is almost done. अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल आपने अपने हिसाब से रखना है. कितना थिन होना चाहिए, कितना थिक होना चाहिए, क्या आप बनाने वाले हैं इस पे डिपेंड करता है. I'm going to use this texture paste to make leaves on the background of my next painting. So stay tuned. Take care. Allah Hafiz.